Hello, good morning students. This is Neeraj Paul from LPM Public School, Gula Bazar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. And students, from today, we will practice our questions that can become in your upcoming examinations. So students, I have already mentioned here, this is practice time and this is part 1. Today is the first day, so I have mentioned here part 1. And from today, we will practice daily the questions such as MCQs, fill in the blanks, true, false, and long answer type questions. Okay? So students, let us start from the first question that I am going to mention here. You have to concentrate your mind here and you have to read the questions carefully, and then after you have to tell the answer and you have to write the answer in your comment box if you know. Okay? Now start everyone. Students, question number first is, which folder contain deleted files? Okay, student, this is your question number first, and I will give you 3 options. You have to tell which one is the right answer. Question is, which folder contain deleted files? Option number A is recycle bin. Option number B is libraries. And option number C is details pane. Okay. Here are the 3 options. Once again, look at the question. Question is, which folder contain deleted file? Student, the question is asking which folder contain the deleted files. जो भी हम अपना फाइल्स या फोल्डर डिलीट करते हैं वो कौन से फोल्डर में स्टोर होता है. ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रिसाइकल bin, option number second is libraries, and option number third is details pane. As you all know students, the deleted files and folder is stored in the recycle bin. So option number A is the right answer, recycle bin. Option number A is the right answer, recycle bin. Okay, students, recycle bin is a folder that contain all the deleted files and folder. Recycle bin is a folder that contain all the deleted files and folder. And what is library? Option number second is libraries. Okay. Second option is libraries. Students, what is library? I have explained in the physical classes. Students, library is a special type of folder which help you access all the content of particular type through a single folder. It centralize the data of one type. It means, for example, you can store all the videos file and folders in one library called videos.
Students, libraries is a special type of folder that contains one type of files, okay, like videos, audios, images, etc. स्टूडेंट्स, जब भी आप अपने सेलफोन में गैलरी ओपन करते हैं, आप देखते हैं गैलरी में कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे वीडियोज का अलग पार्ट होता है, ऑडियोज का अलग पार्ट होता है, व्हाट्सएप इमेज का अलग पार्ट होता है, व्हाट्सएप वीडियोज का अलग पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पार्ट हैं वीडियोज के, ऑडियोज के, इमेजेस के, यही आपके लाइब्रेरी पैनल कहलाते हैं। क्लियर? एंड द थर्ड ऑप्शन इज डिटेल्स पेन। ओके, थर्ड ऑप्शन इज डिटेल्स पेन। स्टूडेंट्स, डिटेल्स पेन, it display the content of disk drive. It display the content of disk drive. ओके, आपके डिस्क ड्राइव में जो भी कंटेंट होते हैं उसको ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, उसमें क्या है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्स पेन से मिलती है। डिस्क ड्राइव क्या है? व्हाट इज द डिस्क ड्राइव? व्हाट इज द डिस्क ड्राइव? स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर is generally divided into 3 or 4 categories. For example, local disk C, local disk D, local disk E and local disk F and so on. तो वही होता है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जो होता है ये आपके हार्ड डिस्क का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो है 4 पार्ट में या फिर 5 पार्ट में या 3 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई एंड लोकल डिस्क एफ। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, लेट मी erase this. I hope you all are understand about the question number first. Question number first is which folder contain deleted files? किस फोल्डर में जो है डिलीटेड फाइल्स स्टोर होते हैं? ठीक है, ऑप्शन आर लाइब्रेरी पेन, रिसाइकल बिन, लाइब्रेरीज, डिटेल्स पेन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रिसाइकल बिन। जो भी हम डिलीट करते हैं फाइल्स या फोल्डर्स को, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? रिसाइकल बिन में स्टोर होते हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन इज अ फाइल और फोल्डर वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर is to be stored. Now come to the question number second. Students, we have to practice our questions daily at your home. Okay, if you want to gain maximum marks in your examination, then you have to learn daily. And then in the series of revision from today, I have start this session, that is practice time. आज से हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज which of the following is not an operating system?
This is the question number second, and I will give you three options. Option number A is Linux. Option number second is Unix, and option number third is Phoenix. Okay, look at the question, students. The question is, which of the following is not an operating system? Option number first is Linux, option number second is Unix, and option number third is Phoenix. यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए. Tell me, students, which option is the right answer? Okay, if you know the answer of this question, then very good. You are reading at home. Look here, once again, question is, which of the following is not an operating system? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन ऑप्शंस में वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर. एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a set of instruction. An operating system is a set of instruction that provide a interface between a user and a computer. Okay, that short form is OS. ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है OS. Okay, there are two type of software, system software and application software. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है. There are many examples of operating system like Windows, DOS 98, Windows XP, Windows Vista, Linux, Unix. These are the example of operating system. So students, come to the question. Linux is a type of operating system. Unix is also a type of operating system, but Phoenix is not a type of an operating system. It means our right answer is question number third. Okay, question number third is a right answer. You will tick on the option number third. अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन नंबर 3 आप चेक करेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और जो आपको ऑड दिखेगा उसको आपको टिक कर देना है. क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, लेट मी इरेज दिस. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस icon provide access to the data stored in the hard disk. In this question I will give you three options.
Option number first is network icon. Option number second is computer, and option number third is application icon. Okay, these are the three options. Look at the question, student. The question is, this icon provide access to the data stored in the hard disk. The question is asking which icon is help us to access to the data that is stored in the computer system. There are three options in this question. Option number first is network icon, option number second is computer, and option number third is application icon. Okay, so students, option number third is the right answer. Application icon provide access to the data that is stored in the hard disk. नेटवर्क आइकन से आप किसी डाटा में एक्सेस नहीं कर सकते, कंप्यूटर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। एप्लीकेशन आइकॉन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके थ्रू जो भी डाटा होता है उसमें आप एक्सेस कर लेते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, लेट मी erase this. Okay, students, question number 4 is, what is folder within a folder called? Student, the question is asking what is folder within a folder called. In this question I will give you three options. Option number first is under folder, option number B is section folder, and option number C is subfolder. Okay, in this question there are three options. Option number first is under folder, option number second is section folder, and option number third is subfolder. Students, a folder within a folder is called a subfolder. So option number third is the right answer. Okay, option number third, subfolder. Computer language में a folder within a folder is called a subfolder. Clear? Option number first and second is the wrong answer. Option number third, subfolder, is the right answer. किसी भी folder के अंदर, ठीक है? Suppose that this is a folder, and inside this a folder is called a, sorry students, inside a folder, any other folder is called a subfolder. Clear everyone? Now students, the next question I will explain in my next video lecture, that will be practice time part 2. Till then students, goodbye. Thank you for watching my video students. Bye bye everyone.